हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हैं गोरेमे ओपन एयर म्यूजियम। इसका एंट्रेंस फी है 100 लीरा। तो अभी हम जाएंगे और टिकट करेंगे। और ये है एंट्रेंस म्यूजियम के अंदर जाने का, जो बेसिकली एक चर्च है। हाइकिंग ट्रेल टाइप्स हैं इस एरिया में, तो आप जब भी आओ आप मेक श्योर करो कि आप अपना शूज़ में आओ और हील्स या पॉइंटेड सैंडल्स अवॉइड करो, क्योंकि काफ़ी सारे टनल्स हैं जिसके अंदर आपको घुसना पड़ेगा, केव्स जैसा है जिसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो ये एक ओवन था, उस जमाने में यूज़ करते थे। और ये जो किचन का रूफ है ये थोड़ा काला हो गया है बिकॉज ऑफ द फ्लेम्स, मतलब आग से जो फ्लेम आया उस वजह से ये। हमारा म्यूज़ियम टूर ख़त्म हो गया और हमें लगभग 1 घंटा लगा टूर कंप्लीट करने में। अगर आपको और डिटेल्स में जानना होगा तो आप ऑडियो टूर गाइड भी ले सकते हैं, जो 50 लीरा पर हेड है। हमने नहीं लिया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और उन्होंने बोला था 1.5 आवर लगेगा। हमें जल्दी से लंच करके दूसरा ATV टूर के लिए जाना है, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया। बट वहाँ पे लिटरेचर भी लिखा हुआ है काफ़ी सारा, बट इन केस आपको और इंटरेस्ट हो क्रिश्चियनिटी में और इंटरेस्ट हो चर्चेस के बारे जानने के लिए आप ज़रूर ऑडियो गाइड लीजिए एंड आप इंजॉय कर सकते हैं म्यूज़ियम का टूर। Only pistachio. Okay. Электронные билеты ваши у меня. You can try first. No, prova. Opa! Oh, thank you. Thank you. How are you today? Good. I don't hear you. Good. More better now. More energy, please. Okay. Today we are full bus, 15 people, 15 people, and today we will do the southern part of the region of Cappadocia. तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये उचीसार कैसल है। तो बेसिकली उचीसार मतलब ऊच मीन्स लास्ट और सार मतलब फोर्ट, तो इसका नाम इसलिए उचीसार कैसल पड़ा। और ये रोमन एम्पायर के टाइम पे बिल्ड हुआ था। कहते हैं कि 1970s तक यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ के लोग, बट नेचुरल डिग्रेडेशन के चलते लोगों को फिर दूसरा जगह शिफ्ट करना पड़ा। पिजन वैली बुलाया जाता था क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में लोग यहाँ पे पिजन्स का घर बनाते थे
क्योंकि पिजन को एज अ मैसेंजर यूज़ किया जाता था और उनका पोप को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता था। एग वाइट को पेंट में यूज़ किया जाता था। तो लोगों का जितना पिजन घर होता था, इसका मतलब उनका प्रॉस्पेरिटी लेवल उतना ज़्यादा होता था। और यहाँ पे लोग पिजन को एज अ मीट नहीं खाते हैं और उसको एज अ पीस बर्ड भी माना जाता है। तो ये रहा पिजन वैली। यहाँ पे थोड़े सुपरस्टिशियस है। तो ये विशिंग ट्री है, तो लोग अपना विश मांग के आके अपने तरफ से कोई भी क्लॉथ या कुछ भी रिबन बांध देते हैं। एंड यहाँ के लोग कहते हैं अगर आपका विश पूरा हुआ तो आपको दोबारा कैपेडोकिया आना पड़ेगा। सो सिमिलर बिलीव्स अराउंड द वर्ल्ड। अब हम आ गए हैं अंडरग्राउंड सिटी देखने। और ये सिटी पहले तो 1800 फ्लोर्स हुआ कर रहा था, बट फॉर विजिटर्स सिर्फ 4 फ्लोर खुला है। तो ये है अंडरग्राउंड सिटी का एंट्रेंस। हम ऑलरेडी टिकट ले चुके हैं और हमारा गाइड हमें डायरेक्ट करेगा। तो हम जैसे जैसे जाते जाएंगे मैं वीडियो लेते जाऊँगी। Over there we see the one mortar for grinding their grains, you know, people they were using this stone. This sections around here, they were all food storages, you know. 5,000 people they lived here, which means more than 40% of each underground city people they used as a food storages. Okay? Okay. Ready to go? Okay. Mind your head more please. Yeah, the tall one. Mavi şeyler var. Ben hiç de değil. Gelin. ये टनल 8 meters long है और सबसे नैरो टनल है अंडरग्राउंड सिटी का। Okay guys, open the tunnel. Now we are at the third open floor of this underground city. In this section here, we see the one winery where they were making homemade wine. People they were putting the grapes here, buy food, they were smashing it. From here they were getting grapes and then they were putting into the jars for the fermentation. Generally for the religious purposes, people they were making wine, but there was other reason that it was easy keeping wine than the water, you know. And also there is a really perfect temperature for keeping the wine inside of the underground cities also. And also, have you ever seen the Indiana? Okay guys, please come closer here. So now, like in the movie of Indiana Jones, here we see the stone door, the rolling stone, you know. One of the most important defensive system of this underground cities for blocking the entrance and exit of the tunnels. People, they were using this stone door. But as you see, one stone door, it's more than 1 tons. So for rolling it, for moving it, people, they were using the wooden iron sticks, you know. And after blocking the tunnels by the stone door, it wasn't possible to open them from the outside, just from the inside. People, they could move it, you know. And it's the same material, people, they were making them inside of the underground city. They weren't bringing them from the outside. और ये 4th फ्लोर है। ये मेन
वेंटिलेशन शाफ्ट है जो पूरा टनल को वेल वेंटिलेटेड रखता है. This underground city, but as I told you in the past, it had 8 floors. So here, there is one tunnel. It was going to 5th floor, but today it's closed, you know. But just 2 years ago also it was closed, but we started to open, you know. Maybe following years we will arrive to 5th floor, and now we are at 25 meters down on the first level. And here and over there we see the 2 more wineries. After making the wine, people they are putting their jars into this hole for fermentation. Okay, so now we will climb up. On the both sides of this tunnel, you will see the some rooms. These were the sleeping and the living areas of the families. In each room, nearly 10 people they were sleeping, and they were putting the rugs, kilns, and animal food by the wooden door. They were separating their places. Okay, and after passing that, we will arrive to common kitchen of this underground city where the people they were cooking. Not every family they had private kitchen, you know. It wasn't possible. So for whole community, people they were cooking inside of these underground cities, you know. And generally people they were cooking on night times, you know, because then they could see the smoke. But inside of the underground cities, generally people they prefer to eat dried products, you know. So now we have seen just 10% of this underground city. As I told you, 90% it's still closed, but architecturally it was same. गाइस, तो आज का हमारा फर्स्ट हाफ का ट्रिप ख़त्म हो गया है और अब हम आए हैं लंच करने. फुल ग्रुप लंच होगा पूरे ग्रुप के साथ. मेनू फिक्स्ड है. देखिए व्यू कितना सुंदर है लंच के टेबल के सामने. Our workshop. My name is Seda. I want to give you information about the stone actually what is. The most important design, harem ring. It is historical design. The harem ring, a Ottoman art. The Sultan presents to his favorite lady this ring. In honor of the 36 sultans who ruled Ottoman Empire. It has been mined. I have too much rings.